I'm Casey. Welcome back to Epilepsy Thursdays and Accept Epilepsy. So, we have been talking about the surgery options for people with epilepsy. We were supposed to do that in the month of October, but due to certain reasons, we could not. And which is exactly why we have been talking about it in the month of November, and on every Monday, though we call it Epilepsy Thursdays, but this is an exception, so we are not going to change the name. We are still going to continue talking about it and calling it Epilepsy Thursdays. Though we are uploading it on Mondays. That this is only going to happen in the month of November. And every Thursday we are uploading an interview with an epilepsy warrior who is breaking barriers regarding epilepsy. So don't worry, we are still continuing and talking about it throughout the month of Epilepsy Awareness Month, which is November. If you think my eyes or my the way I'm talking is slower than normal, then for everyone out there, the thing is I was recently not well. I had a lot of seizures and my MRI has been done, which is exactly why I may sound and look different than the way I normally am. Don't worry, I'm recovering, so yay, we are going to fight it out as usual. Don't we fight it out? We have to keep staying strong. So today we are going to talk about different types of surgeries, but before that, yes, today I'm going to take a question. आज मैं सवाल लेने वाली हूँ. थोड़ी ज़्यादा सीजर्स हो गई थी, इसलिए मेरी आँखें और मैं जिस टोन में बात कर रही हूँ वो थोड़ा सा अलग होगा. बट ठीक है, हमें हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग रहना है और लड़ते रहना है, राइट? तो आज का सवाल, हाँ जी, मैं आज सवाल ले रही हूँ. तो ये है आज का सवाल. केतकी जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. This is Amay Ingre from Pune. I have certain applications for therapy, that is infrared rays, which will cure epilepsy. तो अमय इंगले जो पूना से है, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे कि थेरेपी है कि इंफ्रारेड रेज से वो एपिलेप्सी को ठीक कर सकते हैं, वो एपिलेप्सी को क्योर कर सकते हैं. तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं, देयर इज नो क्योर फॉर एपिलेप्सी एज येट. एपिलेप्सी को गायब नहीं किया जा सकता फिलहाल. आप सीजर फ्री हो सकते हैं, यानी आपकी सीजर्स रुक सकते हैं. यू कैन बी सीजर फ्री, बट यू कैन नॉट बी एपिलेप्सी फ्री एज येट. We do not know what the future holds. If we might not find a cure for epilepsy. We are hoping that a cure comes along sometime in future, but as of now, there is no cure. I'm sorry for that. And regarding infrared rays, well, one of the topics today is LITT. So let's get on with our actual topic of the day. So the first and foremost
surgery, first and foremost surgery that we are talking about today is laser interstitial thermal therapy, that is LITT. Now, what is this? It is also known as laser ablation surgery. इसको लेजर एब्लेशन सर्जरी भी कहा जाता है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? तो सबसे पहले आपका एमआरआई किया जाता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एन एमआरआई इज डन टू लोकेट द प्रिसाइज लोकेशन, द प्रिसाइज फोकल पॉइंट ऑफ योर द सीजर onset. Now, once this precise focal point has been recognized, then a laser surgery is done to eliminate that precise focal point. यानी कि पहले तो आपका एमआरआई किया जाता है. एक बार आपका एमआरआई हो जाए और वो फोकल पॉइंट आपका जो है वो एक बारी आपके न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन को पता चल जाए, तो उसके बाद एक लेजर बीम नहीं बट लेजर से आपके उस फोकल पॉइंट को निकाला जाता है, या फिर आप कह सकते हैं जलाया जाता है क्योंकि वो लेजर है. सो दिस इज द मोस्ट मिनिमल और द लेसर इन्वेसिव सर्जरी. नाउ व्हाट इज इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव सर्जरी? Invasive surgery means your skull is opened. That is, it has been operated on, your skull is opened and a surgery is done. Whereas non-invasive surgery or the most minimal invasive surgery means less amount of skull is opened, or your skull, just a part of your skull is opened and it's operated on. So like I said, LITT, that is laser interstitial thermal therapy, is the most minimal invasive surgery that is there as of now. It is most effective for the PWEs, that is person or people with epilepsy who have mesial temporal sclerosis, that is scar tissues in the temporal lobe. टिश्यू यानी मांसपेशियां. तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव किनको होता है? जिनको मीजल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस होता है, यानी जिनकी जो मांसपेशियां होती हैं, स्कार टिश्यूज जो होते हैं टेम्पोरल लोब में, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है. एक बारी आपके टेम्पोरल लोब जो स्कार टिश्यूज है, जो मांसपेशियां हैं, वो एक बारी पहचानी जाए एमआरआई निकाल के, तो डायरेक्टली लेजर से वो टिश्यू हटाया जा सकता है. So since it is once the MRI is done, once they know the exact precise focal point, they can laser it out, and it is the most effective for those kind of people who have mesial temporal sclerosis. I am so sorry for this. I am not in the mindset as of now, but we have to keep on doing these videos so as to
more people are aware of what they have, what they do not have, and understand what is happening to them. So we have to pass through and continue doing this. Now, what is the eligibility criteria for LITT? आपकी पात्रता क्या है? जिनका फोकल पॉइंट क्लियरली पता चल जाता है एमआरआई के बाद, वो इस सर्जरी के लिए पात्र, इस सर्जरी के लिए योग्य डिक्लेयर किए जाते हैं. So people who have clearly defined areas in their temporal lobe, that is clearly defined seizure focal point, are eligible for LITT. If it is like, if it can be pinpointed, yes, this is the area, this is the part of the brain, this is the focal point, that's it. These people are eligible for LITT. Who can benefit from this are who would benefit from this less invasive approach are the most eligible for this surgery. So unless and until a precise focal point is defined, well defined, is characterized, is identified, are the people who can benefit from LITT and are eligible for this kind of surgery. What are the advantages of this surgery? The advantages are that this is a shorter procedure. बहुत कम समय लगता है ये सर्जरी करने के लिए, क्योंकि आपकी जो खोपड़ी है वो खोली नहीं जाती. Since your skull is not opened completely, it takes a less amount of time. The hospitalization amount of time, you are not in the hospital for a really longer period of time. Your hospitalization time amount, the days that you're hospitalized, is less. आपका हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है, आप कम समय के लिए हॉस्पिटल में रहते हैं. सो ये एक एडवांटेज है अगर आप LITT के लिए योग्य डिक्लेयर किए जाते हैं तो. The possibility of reduction in complications and side effects. So अगर LITT आपको किए जाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो कंपेयर्ड टू जो अलग सर्जरीज होते हैं वो कम होते हैं. नहीं, मुझे सर्दी खांसी नॉर्मली सर्दियों की वजह से हो रही है, हम नवंबर में हैं तो सर्दियां शुरू हो चुकी है, इसलिए मुझे थोड़ी सी सर्दी खांसी है, नॉर्मल वाली, कोविड वाली नहीं है, तो वो टेंशन ना ले. So the possibility of reduction in complications and side effects is the biggest advantage when it comes to LITT, since it is a less invasive surgery and everything, and people who undergo this surgery have an advantage of being seizure free more than any other surgery that is done. So yes, if your precise focal point has been recognized, has been identified, then you are eligible for LITT. And since it is the most minimal invasive surgery than any other surgery, so it is the best surgery. But for that you need to have that focal point recognized. The next surgery that we are going to talk about is
anatomical or functional hemispherectomy and hemispherectomy. Yes, there is a difference between hemispherectomy and hemispherectomy, but we'll get to that later on. Now, first and foremost, this is exclusively performed on children. ये बच्चों पे ही सबसे ज़्यादा किया जाता है और बच्चों पे ही जो उम्र में कम है उन्हीं पे किया जाता है. जिनको सीजर्स, जो बच्चे जिनको सीजर्स सबसे ज़्यादा बड़े एरिया में आते हैं उन पे किया जाता है. So as I said previously, it is exclusively performed in children with seizures which are originated, or seizures, onset of seizures are from a larger area of one side of the brain. Now, what is a hemisphere? Hemisphere is we have a right brain, that is right side of the hemisphere, left side of the hemisphere, plus the frontal lobe and temporal lobe and extratemporal lobe. These are all hemispheres. Hemispheres यानी जगह, जो parts होते हैं दाएं बाएं, ऐसे जो हमारे ब्रेन के parts होते हैं उनको हेमिस्फीयर कहा जाता है. और जिन बच्चों में एक ही कोई हेमिस्फीयर से सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा सीजर्स आ रहे हैं तो उन बच्चों में ये एनाटॉमिकल या फंक्शनल हेमिस्फेरेक्टोमी और हेमिस्फेरेटोमी किया जाता है. बड़ों पे ज़्यादा नहीं किया जाता. तो सबसे पहले एनाटॉमिकल या फिर एनाटॉमिक हेमिस्फेरेक्टोमी यानी क्या? एनाटॉमिक हेमिस्फेरेक्टोमी मतलब रिमूविंग योर फ्रंटल, parietal and occipital lobes on the one side of the brain, whichever side is the onset of the seizures. So parts of the frontal lobe are completely removed, or parts of your parietal, temporal lobe or occipital lobe. We have already spoken about what is parietal and or occipital lobes, which are also known as extratemporal lobes, that is like right behind, right below your brain. We have already spoken about them, and these lobes are completely removed. That is what anatomic hemispherectomy is. It is actually performed only on one side of the brain, not on the other side of the brain, whichever hemisphere is affected. It is performed on deeper brain structures, especially basal ganglia and thalamus. अभी इनके मुझे हिंदी में नाम ना पूछे क्योंकि मुझे नहीं पता, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं. कृपया आप अपने डॉक्टर से पूछें, जानकारी ले. जितने भी आपको सवाल है बेझिझक अपने डॉक्टर को वो सवाल पूछे, आपके डॉक्टर आपको जवाब देंगे. तो ये जो स्ट्रक्चर्स है बेसल गैंग्लिया और थैलेमस, ये वैसे के वैसे छोड़े जाते हैं, इन पे सर्जरी नहीं होती.
So the deeper brain structures like basal ganglia and thalamus are left in place. They are not removed. They are left the way they are. Though the frontal and parietal, frontal or parietal or occipital lobe, whichever it is, are operated or removed. Though those parts are removed, the basal ganglia and thalamus are left in place. So you don't have to be scared, or you don't have to think that my entire brain is going to be removed. No, it is not. The deeper structures are left in place, though certain parts of the brain are removed. Yes, there is a higher risk when it comes to anatomic hemispherectomy, because a part of your brain is removed, right? A part of that child's brain is removed. But it is better to control the frequency of the seizures than continue having seizures, which might end up, the child, the risk of SUDEP is higher if such a surgery is not done. Yes, when I say there is a higher risk, I mean that there is a risk when it comes to development as well. But it is fine. A child can develop, so do not worry about that. So this is mainly done with people who have, doctors, please correct me if I am mispronouncing this. Yes, there is a high possibility of me I might mispronounce it. So hemimegalencephaly. People who have hemimegalencephaly are the ones who are operated on. Now, what is this? This is a rare condition wherein one side of your brain is abnormally larger than the other side of the brain. हेमिमेगैलेंसेफली मतलब क्या? तो जब आपका एक भाग, एक हेमिस्फीयर दूसरी हेमिस्फीयर से बड़ा होता है, तभी ये एनेक्टोमिक या एनेक्टोमिकल हेमिस्फेरेक्टोमी की जाती है। जब एक भाग दूसरे भाग से बड़ा होता है, जो भी भाग हो, तभी ये किया जाता है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, ये सबको नहीं होता, बहुत ही कम लोगों में ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एपिलेप्सी है तो आपको ये होना ही है, नहीं जी, बहुत ही कम बच्चों में ये होता है, तभी ये किया जाता है। ये है एनेक्टोमिकल या एनेक्टोमी हेमिस्फेरेक्टोमी। Now we go on to functional hemispherectomy. Functional hemispherectomy is where a smaller area of the hemisphere is affected. In anatomic hemispherectomy, a larger area of the brain is affected, larger area of the hemisphere is affected, wherein in the functional hemispherectomy, a smaller area of the brain is affected. जैसे कि मैंने कहा, एनेक्टोमिकल में आपका जो हेमिस्फीयर है उसमें बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो अगर आपकी अफेक्टेड है, वो अगर प्रभावित है,
तो आपकी यानी बच्चों की, बड़ों में ये नहीं किया जाता, हालांकि बहुत ही रेयर है ये, उनमें नहीं किया जाता, बच्चों में किया जाता है ताकि डेवलपमेंट, बच्चे बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। एक बार आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाए तो ये करना पॉसिबल नहीं होता। बच्चों में मांसपेशियां अभी भी डेवलप हो रही है तो फटाक से किया जा सकता है। एनाटॉमी में आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा, जो हेमिस्फीयर है उसमें ज़्यादा जगहों में वो प्रभावित होते हैं, ज़्यादा जगह प्रभावित होती है, इसलिए एनाटॉमी की जाती है। फंक्शनल जो है, फंक्शनल में कम एरिया जो है आपके हेमिस्फीयर में, कम एरिया प्रभावित होती है, इसलिए फंक्शनल हेरेक्टोमी की जाती है। When smaller areas of your hemisphere are affected, smaller, that is when functional herectomy is done. Compared to anectomy, this is less riskier. This is less risky, of course, because smaller parts, smaller areas are affected, and it is helpful for a selected few people. That is one of the, how can we say, the negative part of it. It is helpful for a select few, not everyone. So when I'm talking about these surgeries are not for each and every person. It depends on what kind of epilepsy you have. It depends on what is the focal point. There is someone who is driving a motorcycle. I think they have left. Okay. No, they are still there. So these are not for everyone. No. It depends on what kind of epilepsy you have. It depends on what is your focal point, and that is how the eligibility criteria is decided upon. तो ऐसे मत समझिए कि मुझे एपिलेप्सी है, मुझे डॉक्टर बता रहा है कि आपको सर्जरी करानी है तो मुझे ये वाली सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ना जी, ऐसे नहीं होने वाला। आपकी जो योग्यता है, आप कौन सी सर्जरी के लिए पात्र है, ये डिसाइड किया जाता है। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि कौन से अलग टाइप की सर्जरीज होती है इस दुनिया में। तो ये ना समझिए कि आपको यही कराना है या वही कराना है, ऐसे नहीं होता। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज. So that does not mean that you have to go through these kind of surgeries. No, I am simply introducing you to different types of surgeries that are available, that are there today in this world. Now we go to the last part of today's video, that is hemispherectomy. Now, hemispherectomy and hemispherectomy are two different things. Hemispherectomy is where your less brain tissue is removed. आपकी जो छोटी मांसपेशी होती हैं, जो हल्की अफेक्टेड मांसपेशियां होती हैं, वो निकाली जाती है। अब ये पूरी की पूरी तरह निकाली नहीं जाती। Now in hemispherectomy, your entire whatever brain tissue that has been affected is not completely removed, but the surgeon creates holes in the affected sections of your brain. The brain tissue is not entirely removed, but holes are created.
जो भी मांसपेशियां हैं जो अफेक्टेड है उनमें छेद किए जाते हैं, वो पूरी तरह निकाले नहीं जाते, थोड़े थोड़े छेद किए जाते हैं, वो है हेमिस्फेरेटोमी। सो मैं फटाक से आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या आज के वीडियो में हमने बात की, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझसे कुछ छूटा तो नहीं है। सबसे पहले हमने कहा लेजर इंटरस्टिटल थर्मल थेरेपी, दैट इज LITT, wherein an MRI is done to map the precise location, the precise focal point of the seizure। आपकी सीजर कहाँ से शुरू होती है वो MRI करके perfectly वो point ढूंढा जाता है। Then a laser surgery is done wherein the accurate point is eliminated, the seizure focal point is eliminated, laser से वो point निकाला जाता है। There is no opening of the skull, आपकी खोपड़ी नहीं खोली जाती, thus it is the most minimal surgery, most minimal evasive surgery। हमने इवेसिव और नॉन इवेसिव सर्जरी क्या है इसके बारे में बात की। I told you what is the difference between evasive and non-invasive surgery. It is most effective, LITT is most effective for PWEs who have mesial temporal sclerosis, that is the scar tissue in the temporal lobe. What are the eligibility criteria? Well, eligibility is for people who have well-defined, clearly defined area of seizure focus। जब clearly पता चलता है कि हाँ भाई यही जगह है, वही योग्य लोग हैं। अगर clearly नहीं पता चल रहा तो ये सर्जरी नहीं हो सकती, वो लोग पात्र या योग्य नहीं डिक्लेयर किए जाते। Who can benefit from the less invasive approach are the people who are eligible for LITT. What are the advantages of LITT? Well, it is a shorter procedure, thus there is a less hospital stay, obviously, since it is a shorter procedure, and the possibility of reduction in complications and side effects are seen। क्योंकि ये छोटी सी प्रोसीजर है तो आप ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं रहते, ये एडवांटेज है LITT का। तो और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि फोकल पॉइंट कंप्लीटली परफेक्टली पता चलता है, सिर्फ वही लोग ये कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा आपको, अगर आप सीजर फ्री होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। सो मोर पीपल कैन अचीव और कैन बिकम सीजर फ्री with LITT, since your focal point is clearly and well defined. The next thing that we spoke about is anatomical or anatomic hemispherectomy, wherein the frontal or the parietal lobe and the occipital lobes in the temporal area, which is also known as extratemporal lobes, are removed. Yes, even though they are removed completely, the deeper brain structures like the basal ganglia and thalamus are left untouched. They are not removed. Frontal, parietal, temporal या occipital lobe निकाले जाते हैं अगर बच्चों में ये किया जाता है,
वो निकाले गए तो भी आपके जो बहुत ही ज़्यादा डीप जाके जो आपके स्ट्रक्चर में डीप जो आपके ब्रेन में जो चीज़ें होती है जैसे कि बेसल गैंग्लिया और थैलेमस, उनको हाथ लगाया नहीं जाता, वो वैसे के वैसे ही छोड़े जाते हैं और ये बच्चों में होता है. Higher risk, yes, there is obviously a higher risk because the brain parts are removed, and this is done in children, not in adults. It is mainly done with people, with kids who have I keep mispronouncing it. People with hemimegalencephaly, which is a rare condition wherein one side of your brain is abnormally larger than the other side of the brain. जिन बच्चों में एक आपका ब्रेन दूसरे ब्रेन से बड़ा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन है, उन्हीं में किया जाता है. Functional hemispherectomy is removing the smaller area of the affected hemisphere, and it is disconnected from the remaining part of the brain tissue. जो आपकी छोटी जगह अगर आपकी अफेक्टेड है बच्चों की, तो वो निकाली जाती है, वो डिस्कनेक्ट की जाती है बाकी ब्रेन से, ताकि बच्चों में वो सीजर कम हो जाए. ये लेस रिस्की है, इट इज लेस रिस्की ऑब्वियसली गिवन द टाइप ऑफ सर्जरी, इट इज गिवन द टाइप ऑफ द सर्जरी, and it is helpful for a select few. It is not helpful for everyone, every child, but yes, it is helpful for a select few, and it is a very rare condition, so it is not done on every single person. There is a difference between hemispherectomy and hemispherectomy. Hemispherectomy is removing the part of the brain, whereas hemispherectomy is the surgeon making several holes. Hemispherectomy यानी जो न्यूरोसर्जन है वो काफ़ी छेद करते हैं आपकी मांसपेशियों में, वो जगह निकाली नहीं जाती. तो ये था आज का वीडियो, काफ़ी लंबा वीडियो है, हाँ जी, but that is all for today. Till next Monday, though we are calling this Epilepsy Thursdays, next Monday I'll be introducing you to yet another type of surgery or yet another type of things that do help people who have epilepsy. But this coming Thursday we are interviewing yet another awesome epilepsy warrior, so stay tuned till the coming Thursday. Stay strong, keep fighting, and as always, stay happy, stay golden.